topic nung kam din ala class 9 nung sara lumbi chapter de physical quantities and measurement physical quantities and measurement nun bamanga physical quantity of measurement se daba is the ko munga the total no which they no the opinion here physical quantities the way da na bad opinion here measurements so in the name of munga suku no measurement se da suku define what is measurement already tasu the class 8 पर साइंस की तासु तकरीबन 8 चैप्टर की इधर ऑलरेडी मुझसे डिस्कस कर दे मंगो इच measurement what is measurement as the comparison measurement is defined as the comparison between an unknown quantity with a standard is called measurement. कल चिमंगा दियो unknown quantity दियो standard सरा comparison को देता मंगा सोयु measurement is called measurement. तब मंगा सोयु measurement like mass ते जमुसरा length ते time ते etc. दामुसुगु तदिमंगा measurement को कल चिमंगा दा quantities for example mass was or length was or time was तो दामुसुगु दामंगा तदिमंगा मिqdar नहीं मालूम दामंगा सुगु दियो quantities are दियो standards रा दा quantity मुसुगु दियो standards रा measure को दा के quantities दी दामंगा सुगु दियो standards रा सुगु measure को चिमंगा आया पता लगी चिरा दा quantity सुमदा संगय बराबर दा जो किस्मा प्लस जो मुंगो दिदम के सोयु measurement called measurement दिदम के सोयु measurement was the दिन बाद हम सरा भी मंग सरा unit what is unit मुस्तवा unit is a standard with which something is to compare मंगोई unit चे दा मुसरा यो standard दे चिले सरा मुसबु यो सिस मंगा measure को यो quantity मुसबु दो सरा compare को यो quantity से मुसबु compare को जिकला मंगा यो quantity मंगा दिस सिस measure को जितम मंगा सोई द consistent measure को नागे तम मंगा सोई मंगा का unit वायु फॉर एग्जांपल के परस के मंगा कपड़ा अब मंगा दुकानदार से वायु मांग ले इसरा का यो मीटर कपड़ा का 2 मीटर कपड़ा का 2 मीटर कपड़ा का उस दा का मीटर राट दे दा से बेसिकली आ यूनिट दे मीटर तो मंगा सुई यूनिट तो हुई उस दा दुकानदार से कम दे दिवस के दे कपड़े कंपेरिजन छे दा बच्चा से के दा बदला मीटर राट से के दे दा मंगा सोई दे मीटर राट ता मंगा वायु दा से दा यूनिट दे चिले दे से के दे कपड़े दे तो सरा कंपेरिजन कपड़े दूसरी पर कंपैरिजन सके लेका फॉर एग्जांपल मंगो लेका ता क्लास तरा इसता सोरा टाइम 10 मिनट शू 15 मिनट शू was the minute चिमंगा रस्ते या hours चिमंगा लु या चिमंगा seconds आप दा मुसु दा मंगा दियो स्टैंडर्ड सरा दा क्वांटिटी मुसु स्टैंडर्ड सको measure को स्टैंडर्ड सरा मुसु कंपेयर को दा स्टैंडर्ड मुसु दा मंगा यूनिट होय लेकिन आसी kan चले दा मंगो ऐसा यूनिट चले चा द टाइम ने लगा होता है नमक मुंडे पे होती चेयर टाइम चले टाइम ऐसा यूनिट चले आराम से आजम सा सेकंड है या आजम सा माते सा यूनिट चले गेज दे दा वस्तु इंशाल्लाह पर डिटेल हो कि ऐसा यूनिट सो मंगा सतवाई मोस्ट दे सिर्फ मंगा मेजरमेंट पे जनु और द मेजरमेंट ना बात से यूनिट पे जनु मेजरमेंट होता है द कंपैरिजन बिटवीन द अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यो अननोन कंपैरिजन दे द मंगा सोयु मेजरमेंट द यो अननोन क्वांटिटी मंगा यो स्टैंडर्ड सरा कंपैरिजन द मंगा सोयु मेजरमेंट द प्रोसेस द मंगा सोयु मेजरमेंट मंगा का फॉर एग्जांपल दुकानदार मंगा का बड़ा कई ना गसकी
कपड़ा unknown quantity सरा unknown na paras kapra bodan ko pata rawa haste da saki geosis sare compare ki geosis sare saki compare ki da compare na paras chile da sare measurement है वो इस तरीके पर हम सो यूनिट को जो भी दिन चाहिए ना measurement chile हम सिको units with the help of units को the units दी da हम standard दी chile हम सिको compare को da हम standard दी like हम वो इधर meter rate da sare da standard दी हम सिको this is मंगा measure को हाँ तदेना बाद हम सरादी physical quantity सरादी physical quantity measurement को हम वो measurement है और हम सरादी physical quantities was physical quantities मंगा स्तवाई what is physical quantities all measurable quantities are called physical quantities all measurable quantities are called physical quantity summa quantities teacher हम measure कवलिशु मंगे से कवलिशु measure कवलिशु नागे तब मंगा सोयु आगे तब physical all measurable quantities are called physical quantities. Sumra measurable quantities की दिलमंगा सोई देतमंगा physical quantities. What are you physical quantities? Sumra quantities जो हम उसको measure कोई देखा पालेगी जमुन सर density का जादू ससरा measurable quantity का जमुन सर length है उस मंगो वो जिदाम उसको कोई दामंग measure को लेशु mass ते for example दाम उसको कोई दामंगा measure को लेशु मंगो इधर से दाजम सर physical quantity time दे for example time उसको कोई लेशु दा calculate को लेशु दाजम सर physical quantity for example temperature कम दे temperature मंगो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड temperature दे 2 डिग्री सेंटीग्रेड temperature दे डिग्री सेंटीग्रेड चलो मंगो हुई दास रंगा यूनिट हुई दामंग उसको कोई लेशु दामंगा measure कवलिशु जुदा दूसरा physical quantity दूसरा physical quantity सुमरा quantities दी आवागमंगा measure कवलिशु जो आगे तमंगा physical quantities वही तदेना बात बंगा जी मंग वही चीरा जमुसरा physical quantities दी दा जमुसरा दो किस्म two types of physical quantities लेकिन two types of physical quantities जमुसरा the physical quantities दी this way लेकिन सर two types of physical quantities the physical quantities are two types yo tamang wa base physical quantity awal tamang wa derived physical quantity यो जमुसरा base physical quantity रा बलसरा derived physical quantity वस बमु पेजनु चेरा दा होता सुदा पता लगे दा टाइप्स देचा the physical quantity चा the physical quantities types की दा चा types की the physical quantity the base quantity physical quantities mu define fu चेरा base physical quantity मुस्तवायो the base physical quantity mu वायो those quantities which are defined and standardized for other quantities that can be defined from which other quantities can be defined mongoi da ha quantities di chi da zo sishwi da zo define precision standardized precision aw tadi na mong more quantities di da so shu define kawale shu for example molecule definition sa da de chi base quantity base physical quantity base physical quantities those quantities which are defined precision and standardized from which other quantities can be defined
define jadi nama sekolah itu nur quantity jadi dah sekolah itu dati define sekolah itu ha quantities ciaga se should define should standard should jadi nama nur quantities sekolah itu they have the define sekolah itu tadi yo boleh revision sarda se nama voice the minimum number of quantities the minimum number of quantities from which other quantities can be defined minimum number of quantities from which other quantities can be defined. That is the minimum number of quantities. That is the minimum solution. The minimum number of quantities that define correlation. Take two. There is some example definition. No, the base quantity the minimum number. Ida the has specific tadat. 7 3 base physical quantities या दागे ना बाकी मान द चीज़ ना मुसको दाते भी हम गाड़ डिराइव कोले शू जाने नूर क्वांटिटी से कोले शू जोड़ा हुआ शू वाह खबर मुसको मंगो च base physical quantity में डिफाइन करा ओपन पेज ना उस base physical quantity for example जिसम से दासी लेकिन हम वही example length तेजम सरा mass तेजम सरा time दे temperature etc. That was the base physical quantities. Base physical quantities. उस तरीके बाद हम सराजी derived physical quantities हम सरासरी other quantities अगर she derived from the base quantity those quantities which are derived from those quantities which are derived from base quantities. Base physical quantities, base quantities. Those quantities which are derived from base physical quantity. Base physical quantity. The base physical quantities are derived. She is the quantities derived quantity. Yeah, the definition those quantities which are obtained by multiplying or divide the base quantities are the two derived quantities. That is your definition, sir. Those quantities which are obtained by multiplying or dividing base physical quantities are two derived quantities. Two are more than two derived quantities. Derived quantities, yeah. या दोन या base physical quantity या derived quantity चिमंगा multiply को या divide को पयोबल माने निदम सराजी derived quantity like for example mangwayu force. What is force derived से दादम सरा derived quantity. Force हम सारा derived quantity है. Force मangवाyu mathematically F is equal to ma. देख लो करे उस फोर्स हम ससरा derived quantity से ना obtained है दो quantities पूरा mass के हम सरा और देख लो करे से acceleration. The mass of the acceleration, the multiplication. Your base quantity is derived quantity. Both your base of the derived quantity, the multiplication. The new quantity is the force. They are derived quantity. Items derived quantity. Like this is the density. Mass per unit volume. Develop mass that is the base quantity volume. Azam sir derived quantity example से found quantity the multi division नंद से है ये new quantity आगे तो सो density को density जो है हम के रो ना सबको represent को और mathematics is the mass per unit of volume.
एटसेट्रा ډېر شي زموږ سره په زرګونو زموږ سره بیس کوانټیټیز چې دي هغه زموږ سره 7 دي او ډیرایوډ کوانټیټیز چې هغه زموږ سره په سوونو دي مختلف قسمه فورس دی پریشر دی ایریا دی دا ټول زموږ سره دا زموږ ټول زموږ سره په ډیرایوډ کوانټیټیز کې راځي پوه شئ نو دنه ټاپک چې زمون کوم نو زمون میجرمنٹ از د کو د میجرمنٹ نه بعد کو یونټ از د کو د یونټ نه بعد او فزیکل کوانټیټیز او د فزیکل کوانټیټیز ټایپس کوم دي زمون سره بیس فزیکل کوانټیټی او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز پس کتا سو اني ټایپ اف کوېسچن تاسو په ذهن کې راځي نو زما واتس اپ نمبر چې کوم دی نو هغه زما دی واتس اپ نمبر 022220877 او تاسو چې کله هم ماته واتس اپ کوئ WhatsApp کوئ نو تاسو به اصل کې SSTA بنیر دا باندې به SSTA بنیر ولیکئ دا نه بعد خپل کوېسچن چې هغه تاسو کوئ زه بالکل تاسو د WhatsApp باندې دا اصلا به پړم بلا کې تاسو کې SSTA بنیر دا نه بعد خپل کوېسچن کوئ تاسو بالکل دا یې څه کول انسر کوئ یاد ساتئ چې کله په ویډیوز باندې کمنټ کوئ انسان دې کمی بیشي په ویډیوز کې راتلی شي تاسو چې غلط کمنټس چرته هم مه کوئ فرض قسم کمنټس نشي کولای زما د اصلاح لپاره یو خبره کوي تاسو کولی شئ باقاعده ماته واتساپ کولی شئ په دې نمبر باندې بالکل